Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter 10. That is the name of the chapter is Flow of Water. Now this chapter is the second chapter of your unit 2, that is Precious Water. Okay, of this is a chapter which is included in the curriculum of your subject EVS, that is Environmental Studies of class 5. Okay. Now students, do you know that in rainy seasons, this rainwater flows from this waterfalls and rivers and gets collected in ponds? Okay. Now, you know that the water flow from upward to downward direction. That is that a water will always flow from this direction. Suppose this is a waterfall. So water will be flowing from upward to downward. Okay, so water flow from upward to downward motion. This is a waterfall. Okay, so you all have seen a waterfall, or you all may have seen the image of a waterfall. So this is a waterfall, and water always flow from upward to downward direction. Please students, always remember this. Okay, now that was the thing that I want to discuss कि flow of water किस direction में होता है, from upward to downward. Okay, and this flowing water gets collected in ponds and lakes. Okay, आप लोगों ने बहुत सारी जगह flowing water देखा होगा, waterfalls पे, rivers में, है ना? So this is the water where you see that the water is flowing or moving. Okay, और ये फ्लोइंग वाटर हम बहुत से पर्पसेस के लिए लेते हैं. इट इज यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, इट इज यूज्ड फॉर many purposes also. So the next heading that we are going to study is water in the fields. What are fields? These are farms. Okay, water in the fields. बच्चा देखिए, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से रेन होती है ना, बहुत हेविली, सो देयर विल बी नो प्रॉब्लम ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स इन द फार्म्स और फील्ड्स. बट अगर बारिश नहीं हो रही है, दैट इज द रेन इज नॉट देयर सो मच, सो क्या होगा, बहुत कम या हुई नहीं है बारिश. So what happens? It is become very essential to provide the water to these crops which are growing in your farms. अगर हम पानी नहीं प्रोवाइड करेंगे हमारे फार्म्स में, जो क्रॉप्स हैं, जो पेड़ हैं, दैट इज जो खेत में जो हमारे पौधे लगे हुए हैं, द क्रॉप्स दैट आर ग्रोइंग इन योर फार्म्स, वो क्या होंगे, वो डाई आउट हो जाएंगे, वो मर जाएंगे. सो दैट्स व्हाई वी रिक्वायर टू प्रोवाइड देम विद वाटर. एंड जब हम आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं हम इरिगेशन. सो व्हाट इज वाटर इन द फील्ड इज कॉल्ड irrigation. That is the process of watering the crops is called irrigation. Okay, so the process of watering the crop is called irrigation. Okay, now students, this water is made available to the agricultural lands from various type of sources, and various methods we use for the purpose of or for the method of irrigation. अगर आपको पता है वाटर अगर आप इक्वली नहीं प्रोवाइड करेंगे ना फील्ड्स या फार्म्स में, सो आपके क्रॉप्स मर जाएंगे. सो यू हैव टू प्रोवाइड द वाटर इन अ वेरी सफिशिएंट अमाउंट आल्सो. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, you know this water can be provided in various methods. So we'll be discussing method of irrigation. There are different methods of irrigation. The first method of irrigation is through a
ट्यूब वेल एंड मोटर. ओके, आप क्या कर सकते हैं, थ्रू अ ट्यूब वेल एंड अ मोटर, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, पानी प्रोवाइड कर सकते हैं, और अलॉन्ग विथ पाइप ऑल्सो, उसके साथ पाइपलाइन भी होनी चाहिए. क्या होता है, ट्यूबवेल से पानी निकालिए मोटर की हेल्प से, और पाइप से आप क्या कर सकते हैं, उस पानी को फार्म्स में पहुंचा सकते हैं. और यू कैन यूज स्प्रिंकलर फॉर irrigating your farms. Okay, so these are the different methods of irrigation which can be used, and there are many more methods also, like drip irrigation is there, or what is sprinklers, फुहारा निकलता है. You can see the image given in your book, that is first image is irrigation in the field through a tube well with pipes and motors. Next is irrigation through sprinklers. Okay, and next another method of irrigation is can be from an underground source also. आप क्या कर सकते हैं, अंडरग्राउंड से पानी निकाल सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर, and that water can be used for irrigation purpose also. Okay, so आपको पता है आप अंडरग्राउंड से वाटर निकालते हैं, वो किस लिए निकालते हैं, through underground water also we can irrigate. So अंडरग्राउंड से वाटर पता है कैसे निकलता है बच्चा, we require machines, ड्रिलिंग की जाती है ग्राउंड में, क्योंकि बहुत डीप होता है, वेल्स में भी, स्टेप वेल्स सब में पानी बहुत डीप होता है ना, बहुत अंदर होता है ग्राउंड में. हम क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, उसका एक पाइप डालते हैं जिससे कि अंडरग्राउंड से पानी निकल जाए. दैट इज अंडरग्राउंड वाटर बाय द यूज ऑफ हैंड पंप्स. यूज करते हैं ना आप लोग. सो दिस इज द यूज ऑफ इरिगेशन वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड. ओके, सो the water can be drawn from the earth and supplied to the fields. Okay, so this is about the methods of irrigation, that is water in the field. Okay, how this water is provided for the irrigation purpose. Now students, let us discuss another heading, that is less and more requirements. Let me write on the heading first, less and more requirement. Okay, now students, you know each crop requires different amount of water. हर एक क्रॉप को बच्चा एक अलग अमाउंट चाहिए वाटर रिक्वायर करने. अगर फार्मर्स को ये नॉलेज हो अच्छे से, दे रिक्वायर दिस गुड नॉलेज कि भाई किस क्रॉप को कितना पानी चाहिए, देन दे कैन conserve water or make the proper use of water. You know, there's some crops like crops of your, some crops require less water, some crops require more water. So अगर मुझे पता है कि भाई मेरे पास पानी ज्यादा है, so I will be growing the crops which require more water, like paddy and this rice, sugarcane. I will be growing this, okay, as they require more water. So sugarcane, rice and paddy require more water. Okay, and similarly the crops of this peas, grams, onion and cucumber requires less water. Okay, so अगर आपको ये आइडिया हो कि भाई किस क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए, किसको कम पानी चाहिए, we can prevent the wastage of water which happens in the fields. Okay, are we clear on this? Now students, we'll be starting the next heading, that is how does a rahat work. Okay, let me wrap this. Okay, let's start. How does a
rahat work? Okay, so how does a rahat work? Now students, this rahat is a traditional irrigation method. Okay, now what happens in this rahat? Rahat is a wheel-like structure and that is installed over a shallow wells और step wells. दोनों जगह आप step wells और wells दोनों में आप इसे install कर सकते हैं. Now what happens in this? It has two wheels. एक wheel में बहुत सारे water vessels attach होते हैं. Okay, so what happens when they enter in the well? Okay, when they enter in the well's water, the vessels get filled with water. जो ये पानी भर गया ना vessels में और जब वो ऊपर आ रहे होंगे तो ये जो vessels होगा ये rotate होंगे wheel के ऊपर and this water continuously collect हो रहा होता है. एक parapet बना हुआ है well के ऊपर. Okay, so दो wheels होते हैं इसमें, wheels होते हैं. एक wheel जो water जो well में है उसके पास रहता है, एक surface होती है ना well की वहां पे रहता है. एंड दिस वाटर जो पैराफिट है जो सरफेस पे बना हुआ है वहां पे वाटर कलेक्ट होता रहता है और वहां पे ड्रेन्स बनी हुई है और उन ड्रेन से वो पानी फील्ड्स में जाता है फॉर द इरिगेशन पर्पसेस. दिस इज वन मेथड. अभी व्हील्स रोटेट भी तो हो रहे होंगे तो कैसे रोटेट होते हैं? ऑक्स आर यूज्ड टू रन द राहत. ओके, अगर आप इसी के बीच में एक शुगर केन मशीन लगा दें सो व्हाट हैपेंस? This in the path of this bull, if a sugarcane machine is there, so what happens? The juice can be extracted also along with irrigation. Irrigation भी हो जाएगा और आपको गन्ने का जूस भी निकल जाएगा. Next thing you can do or you can use a घानी machine. आपकी जो mustard oil होता है ना बच्चा, mustard oil can be created. A घानी machine is there and it is placed between this ox and the wheel of this rahat and जब ऑक्स से रोटेट कर रहा होगा सर्कुलर मोशन ले रहा होगा सो जैसे जैसे रोटेट करेगा घानी मशीन भी क्या करेगी? मूव करेगी. जैसे जैसे मूव करेगी सो जो उसमें से मस्टर्ड ऑयल क्या होगा वो निकलने लग जाएगा. एंड सो दिस इज कॉल्ड किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन. तो दो काम हो गए, आपको इरिगेशन के लिए पानी भी मिल गया एंड यू हैव इधर आपने शुगर केन का जूस निकाल लिया दैट इज गन्ने का जूस निकाल लिया या आपने मस्टर्ड ऑयल निकाल लिया दैट इज सरसों का तेल. ओके, नाउअडेज instead of using this ox or this bull, we are using electric motors to increase the input or to reduce the use of ox these days. At present, some people use dynamos to generate electricity also with the help of oxen to perform small experiments also. बच्चा क्या हो रहा है आजकल this राहत में जहाँ ऑक्स है तो ये रोटेट कर रहा है. so, इस रोटेट करने की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं ऑन अ स्मॉल लेवल. बट इसमें भी अभी बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है. सो यू कैन सी देयर इज इमेज गिवन ऑफ दिस राहत ऑफ टू दैट इज वन इज दे सी दैट ऑक्स इज देयर and it is rotating and another image of the rahat where the water is collecting on the parapet and there is a drain also जिससे कि वो fields में पानी जा रहा है. So this is how does your rahat work. Okay, now students I'll be giving you some questions regarding this chapter. Okay, let me wrap this and give you some questions of this chapter. So the first question is, what is irrigation? Okay, write what are the different method of irrigation. Okay, the next question I'm giving you, the water flow from upward to downward direction
how this property of water is used in different ways. Okay. The next question I'm giving you is, how can we draw water from underground? Okay. Write the crop, write the three crop which require less water. Okay. The next question is, write the three crops which require more water. Okay. And the next question is, how does a rahat work? Okay. Okay, next question is, and this is the last question of this, to give two alternative things that we can have by using rahat. Okay, so this completes a question. Now I'm really telling you. The first is, what is irrigation? So आपको लिखना होगा कि भाई हम water जब करते हैं crops को, this the method, the process of watering the crop is called irrigation. Next is, what are different methods of irrigation? Tube wells की help से, that is आप pipes और motor की help से जब irrigation कर सकते हैं. Now the next question is, the water flows from upward to downward direction. इस property को use करके हम क्या क्या different ways में इस property को use करते हैं, water की इस property को, in irrigation also and many ways. It is also used for cleaning also water. Okay. Now next question is, how can we draw water from underground? By use of machines and drilling, we can use the water which is present at underground. Next is, write the three crops which require less water. ऐसे कोई तीन crops लिखिए जिनको water कम चाहिए. Okay. Next question is, write the three crops which require more water. Okay. The next question is, how does a rahat work? So you'll be explaining full process कि भाई राहत किस तरह से काम करता है. उसके दो wheels होते हैं. It has one wheel near the surface of well and next wheel is near the water of the well, and it start rotating with the help of ox. नीचे वेल से वाटर आता है, ऊपर पैरापेट पे कलेक्ट होता है, वो पैरापेट पे कलेक्ट होने के बाद ड्रेन्स की थ्रू पूरा इरिगेट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव टू अल्टरनेटिव थिंग दैट वी कैन हैव बाय यूजिंग राहत. ओके, लेट मी कंप्लीट दिस क्वेश्चन. अलोंग विथ इरिगेटिंग द फील्ड. ओके, सो ऐसी कौन सी दो चीजें हैं? गन्ने का जूस, दैट इज शुगर केन जूस, एंड द मस्टर्ड ऑयल, दैट इज सरसों का तेल, वी कैन अचीव अगर हम राहत यूज करें with this घानी machine and a sugarcane machine. Okay, so this complete a question. All the questions, please students try to do this question with your own, or you can take a help of your elders.
बट आप ऑनेस्टली क्वेश्चंस खुद करिए, बिकॉज अगर आप खुद करेंगे तो बच्चा यू विल बी हैविंग दिस नॉलेज कि आप किस तरह से आपने क्या सीखा है इस चैप्टर में. नाउ दिस कंप्लीट्स चैप्टर 10. विल बी स्टार्टिंग द चैप्टर 11.